Welcome student, myself Sudhir sir. We are going to start JEE main course in physics. Okay, so first topic, motion in one dimension. Let us discuss some basic concepts related to motion in one dimension. So first one, you can say equations of motion. Yes, so first one, V is equals to U plus AT. Second one, S is equals to UT plus half AT square, and third equation, V square is equals to U square plus 2AS. Now, while we consider these equations, by default we consider that acceleration is constant or uniform and body moves in straight line, where U is initial velocity, V is final velocity, T is time, A and acceleration. Yes, that is displacement covered in time T. V square is equals to U square plus 2AS, that is final velocity. U square initial velocity plus 2A into S. Yes, that is displacement. So these equations are by default considered as motion in horizontal direction. Okay, in one direction, either in this forward direction or backward direction. When we consider motion in one dimension, any one direction you can consider as positive. For example, if I consider this direction is positive, then automatically the opposite direction will be negative. तो ये आप खुद की चॉइस है, इसको अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव. नाउ सेम इक्वेशंस व्हेन वी अप्लाई फॉर द बॉडी मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. अगर बॉडी मूव्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, then for example, suppose here is the initial position of the body and body is moving in this downward direction. Then in the beginning initial velocity is 0. Suppose after time t body reaches at this position, then it is final velocity v. This displacement covered generally we discuss or say as s, but now in vertical direction same displacement is denoted or we say as height of the body covered. So we can denote h instead of s. Okay, and in acceleration, what happens when body moves in downward direction? You can say it is in free fall. Then acceleration acting on the body is nothing but acceleration due to gravity. So same three equations we can say as first one, V is equals to U plus GT, right? Same equation can be written as V is equals to U plus GT. Then second equation, S is equals to UT plus half AT square can be written as H is equals to UT plus half GT square. And third equation, V square is equals to U square plus 2G into H. Okay. Now, more about that. When body starts from rest, this term becomes 0. So, say first equation becomes V is equals to GT, then H is equals to half GT square and V square is equals to 2GH. So these are the equation after changing the values, right? So using this, if you want to calculate T,
that becomes V by G. And here generally we want to calculate H, then it becomes, before that one term, H is equals to V square by 2G, right? So such changes we can apply in numericals. So these are the changes when body falls from starting position rest in downward direction. Okay. Then next, if body is projected vertically upwards, then what happens when body moves in vertically upward direction? Velocity goes on decreasing. Velocity decreases as acceleration due to gravity opposes the motion of the body. So therefore, same first equation, which was V is equals to U plus GT in vertically downward direction. Second, S is equals to UT plus half a T square, sorry, GT square. And third, V square is equals to U square plus 2GH. So these are the three equations when body moves or body falls from height. Now in this case, body is moving in upward direction. So in that same equation will be written as V is equals to U minus GT, H is equals to UT minus half GT square, and third, V square is equals to U square minus 2GH. That means instead of plus G, it is opposite to the motion of the body. So we have considered as negative. So instead of plus G, there is minus. So that is the only change. These equation we are going to apply mostly in motion in one dimension. Okay. So let us go to numericals. Okay. So बच्चों देखो फर्स्ट वन, a piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of 100-meter height building. At the same time, a bullet of mass 0.02 kg is fired vertically upward with a velocity 100 meter per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood, then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below is, in bracket G is given as 10 meter per second. So this question is asked in JEE Main 2019. Options are given as 10 meter, 30 meter, 20 meter and 40 meter. Okay. So say here given mass of the wooden piece 0.03 kg. Suppose this is the height of the building, which is given as 100 meter, right? And wooden piece is dropped from this position, okay, whose mass is given as 0.03 kg. When it starts to fall down, its initial velocity u will be 0, as we have discussed above, right? And what is next? At the same time, bullet of mass 0.02 kg. So from here, bullet of mass 0.02 kg is fired vertically upward with velocity 100 meter per second. तो इसकी velocity 100 meter per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood. मतलब कहीं किसी एक पोजीशन पे, कंसिडर दिस वन, क्या हो जाएगी,
ये जो वुडन पीस है उसमें वो बुलेट एम्बेड हो जाएगी. So then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling it. तो ये कौन से पोजीशन पे ये होता है, that we have to find out, and total height is given as 100 meter, right? So consider this distance, इसको हम h को रिप्लेस करेंगे, इसी को हम बोलेंगे h. So then this section will become 100, total height is 100, so 100 minus h. So these are the given quantities. So just now go to calculations. So first one we will calculate at what time this collision takes place. So first point, time of collision. So that time is given as distance upon speed, common basic formula, and that is you can say 100, and speed of the bullet, that is also 100. So we can get 1 second. So time of collision become 1 second. Now second, using this value of time, say here ये वुडन पीस जो है वो स्टार्ट से 0 वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होता है. सो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस gt. दैट बिकम्स, अभी अभी हमने जो डिस्कस किया, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 होती है, सो u इज इक्वल्स टू g इंटू t, राइट? तो g की वैल्यू गिवन एज 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 1, सो दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब जहां भी कोलिजन हो गया उस पोजीशन पे ये जो वुडन पीस है उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? नाउ वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट दिस पोजीशन. सो थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी फॉर बुलेट, सो दैट इज u माइनस gt. अब क्या हो जाएगा, बुलेट ऊपर जा रही है, सो दैट विल बी अपोजिट डायरेक्शन, दैट बिकम्स माइनस gt. So that is equals to initial velocity 100 minus g10 into time 1. So that becomes 100 minus 10. So velocity of bullet we got, that is 90 meter per second. So these are the two velocities we have got. So इस पोजीशन पे अगर उसको कोलिजन होती है तो इस पोजीशन पे वुडन पार्टिकल, वुडन बॉडी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और बुलेट की वेलोसिटी हो गई 90 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन. नाउ एट दिस पोजीशन कोलिजन टेक्स प्लेस, सो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओके, सो यूजिंग m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 into v. Actually the conservation is m1 v1 plus m2 v2, but in the given example what happens, wooden body and bullet at this point collision takes place. Then consider this is as m1, this is as m2. Then what happens, at the time of collision it embedded into the wooden body, bullet. So that becomes, total mass becomes m1 plus m2 and combined velocity, common velocity becomes v. So if we consider this one as positive, you can consider this is as negative. तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट है. So माइनस m1 कितना है 0.03 into initial velocity of the body, wooden body, that we have calculated as 10, plus second consider that is bullet 0.02 multiplied by 90 is equals to total mass
0.03 plus 0.02, that becomes 0.05 and common velocity v, right? So after calculation, so for next calculation, just we have to simplify this one. Suppose I multiply by 100, that becomes minus 3 into 10 plus 2 into 90, that is equals to 5v. So minus 30 plus 180 is equals to 5v. It gives you 5v is equals to 150, which is v is equals to 150 divided by 5, that is 30 meter per second. Hence, the option is second one, 30 meter per second. Okay, okay. Now let us go to next second numerical. See, a passenger train of length 60 meter travels at speed 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at speed 30 km per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction and in the opposite direction is. So ratio is given as A 25 as to 11, 3 by 2, 5 by 2, 11 by 5. So in given question, what happens? One train is moving with speed 80 km per hour. Its length is given as 60 meter. Consider this one length L1 as 60 meter and speed u is equals to 80 kilometer per hour. Another train denoted as L2 120 meter and with speed what is given 30 kilometer per hour, right? So दो ट्रेन है और आगे कंडीशन क्या है? We have to find out ratio of time taken by them to cross each other. First one, if they are moving in the same direction, and second, if they are moving in opposite direction. Suppose two trains moving in the same direction, तो स्पीड सारा डिफरेंट होगा. तो सेकेंड जो ट्रेन है उसका स्पीड 120, उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और लेंथ 120 मीटर है, और फर्स्ट वन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसकी लेंथ 60. सो जो छोटी है उसका स्पीड है ज्यादा, जो बड़ी है उसका स्पीड है कम. व्हेन दे क्रॉस ईच अदर and moving in the same direction, then we have to consider relative velocity. And again, if they are moving in opposite direction, then also they cross each other. In that case also we have to consider relative velocity. तो यहाँ relative velocity का point, relative velocity is nothing but difference v1 minus v2 when they are in same direction. Same direction. That means 80 minus 30, you get 50. And when they are moving in opposite direction, then relative velocity is v1 minus of v2. When they are in opposite direction, other will be opposite, so that is v2. So that becomes 80 plus 30, which gives you 110 meter per second. So using these two velocities, we have to find out time and then we will find out ratio. Okay. So first, in same direction, time t1
सो टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दैट distance is nothing but L1 plus L2 divided by speed. Here we will get relative velocity. So total distance, that is 60 plus 180, 60 plus 120 divided by relative velocity in the same direction, that is difference. What is that? 80 minus 30 gives you 180 divided by 50, or you can say 18 by 5. Okay, so this is time taken by two trains to cross each other when they are moving in the same direction. Now both the trains when move in opposite direction, then time t2 is equals to, distance will be same, that is 180 divided by, now relative velocity in opposite case we have considered as addition. So 80 plus 30, so 180 divided by 110. So this get cancelled, 18 by 11. This is the T2. We have to find out ratio time taken by passenger, मतलब T1 as to T2, T1 by T2. So T1 की वैल्यू है 18 by 5 divided by T2 की वैल्यू 18 by 11. You get 11 by 5. Hence the option is D. आया समझ में? ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल. This example is asked in JEE Main 2009. See, a particle has initial velocity 3 I cap plus 4 j cap and acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds is 1.7 units. Here थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, 1 पॉइंट नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सो फर्स्ट ऑप्शन 7 units, second one 8.5 units, third one 10 units and fourth one 7√2 units. ठीक है. So here initial velocity is given as 3 I cap plus 4 j cap. So initial velocity u 3 I cap plus 4 j cap and acceleration is given as 0.4 I cap plus 0.3 j cap. It's a speed after 10 second, time given as 10 second. Okay, so we are going to use equation of motion in one dimension, but if you see, this is example having initial velocity 3 I cap plus 4 j cap, and I cap is nothing but unit vector along x axis, j cap unit vector along y axis and k cap unit vector along z axis. तो ये प्लेन इन मोशन से भी कंबाइन है, लेकिन इसमें हम खाली इक्वेशन इन वन डायमेंशन v is equals to u plus at वही यूज करना है. सो u v is equals to u plus at. तो इसमें u दिया है, वेक्टर u, वेक्टर a दिया है, t दिया है. सो इट इज स्ट्रेट एग्जांपल. से so v is equals to वेक्टर u, that is 3 I cap plus 4 j cap plus vector a into t. A is given as 0.4 I cap plus 0.3 j cap multiply by 10, टाइम दिया है, राइट. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट बिकम्स v is equals to 3 I cap plus 4 j cap plus multiply by 10, again you get 4 I cap plus 3 j cap. So simple addition it is 4 I cap plus 3 I cap plus 4 I cap, 7 I cap plus 7 j cap. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर v. We have to find out speed, and speed का मतलब क्या,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अगर आपको याद है थोड़ा, सो मॉड v वेक्टर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस अगर होता तो vz स्क्वायर। ये भी याद रखो, as there is ijk, so I have this one term. Now in this current example only two quantities along x axis and y axis are there, so only there will be vx square plus vy square, which are again equal. So 7 square plus 7 square, that is equals to 2 multiplied by 49 square root 7 root 2. Got it? So the option will be fourth, 7 root 2 units. Okay, so ये हो गया third example. So let us go to next one. Next example from JEE Main 2004. An automobile traveling at 40 km per hour can be stopped at distance 40 meter by applying brakes if the same automobile is traveling at 80 km per hour. The minimum stopping distance in meter is. Assume no skidding. Okay, so ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन आर ए ऑप्शन 100 मीटर, बी 75 मीटर, सी 160 एंड डी 150 मीटर. So an automobile traveling at speed 40 km per hour. So initial velocity given as 40 km per hour can be stopped at a distance of 40 meter. So distance here, that is S, 40 meter, by applying brakes if same automobile is traveling at speed 80 km per hour. That means second case. So I will denote this is as U1 and S1. In second case, I will say U2 80 km per hour, the minimum stopping distance. So S2 we have to find out. So if you compare U1 is 40 and U2 is 80, it is again 2U1, 2 times है, right? So simple equation of motion. जो 3 हमने देखे थे अभी, फर्स्ट V is equals to U plus 80, second S is equals to UT plus half 80 square, and third V square is equals to U square plus 2AS. So basic equation we have to use here because it is in horizontal direction, right? So S1 S2 निकालना है, so better we can consider this one and this one, दोनों है, इसमें S नहीं है, so ये नहीं होगा. तो सेकेंड एंड थर्ड में से आपको डिसाइड करना है कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है. देखो, अकॉर्डिंग टू डेटा, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, वन मोर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहां स्टॉप्ड एट द डिस्टेंस बाय 40 मीटर. मतलब अगर बॉडी यहां से यहां गई, ये डिस्टेंस 40 मीटर, तो यहां U1 की वैल्यू हो गई 40 और V की वैल्यू हो गई 0. इन द सेकेंड केस ऑल्सो सेम, U1 की वैल्यू हो गई 80, आई मीन यूनिट किलोमीटर पर आवर, और यहां 0 हो जाएगा. तो ये एडिशनल. सो दिस इज इजियर टू यूज. देखो, 0 इज इक्वल्स टू, दिस केस के लिए 0 इज इक्वल्स टू U स्क्वायर, आई मीन U1 स्क्वायर. अभी देखो इधर, बाय अप्लाइंग ब्रेक मतलब एक्सेलेरेशन निगेटिव रहेगा, सो आई विल राइट एज -2AS. सो AS1 एक्सेलेरेशन सेम रहेगा. इन द थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड सेम एक्सेलेरेशन. सो
and in second case 0 is equals to u2 square minus 2a s2. Using this, s1 is equals to u1 square divided by 2a, and here s2 is equals to u2 square divided by 2a. तो निकालना क्या है, s2 निकालना है. सो आई विल टेक s2 by s1 ratio, s2 by s1, that is u2 square divided by 2a multiply by, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2a divided by u1 square. तो ये 2a गेट कैंसल, s2 निकालना है. s1 की वैल्यू दी है 40 मीटर, दैट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर. इसलिए मैंने इधर शुरू में ही लिखा है u2 की वैल्यू 2u1 है. सो 2u1 अगेन डिवाइड बाय u1 स्क्वायर, ये u1 गेट कैंसल, देयरफॉर s2 becomes 40 multiplied by 2 square, that is 4. So s2 you get, that is 160 मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. तो ऑप्शन हो गया सी. ओके, सी वंस अगेन. फर्स्ट केस में u1 दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और s1 डिस्टेंस दिया है 40. तो इनिशियल स्पीड 40 and applying brakes, body or automobile stops, so final velocity becomes 0. In second case same, initial velocity is 80, that means 2 times of the first case, and again final becomes 0. So using third equation, v square is equals to u square minus plus 2as. For applying brake, acceleration is negative, so I have converted that v square, that is 0 is equals to u1 square minus 2as1, and second केस के लिए 0 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर माइनस 2as2. तो इसी को मैंने कन्वर्ट किया s1 इज इक्वल्स टू, और इसी को कन्वर्ट किया s2 इज इक्वल्स टू, दोनों को रेशियो लिया s2 बाय s1, एंड कॉमन 2a गेट कैंसिल, u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर, दैट इज रेशियो आई गॉट 2 स्क्वायर, दैट इज 4, एंड 40 आई विल टेक अपोजिट साइड, सो 40 into 4, so s2 becomes 160. So बच्चों, next example, fifth one. A body is thrown vertically upwards. Which one of the following graphs correctly represent the velocity of versus time? ये JEE 2017 का एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट ग्राफ में दिखाया है, ग्राफ along y axis velocity is given and along x axis time is given. Everywhere same. Okay, here it is also time. तो चार जो ग्राफ है उसमें से विच वन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द गिवन कंडीशन. बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. तो थ्योरी में हमने देखा था क्या, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स तो क्या होता है, v डिक्रीज होता है, v डिक्रीज होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स अपोजिट टू इट एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस. तो इसमें से जो हमने इक्वेशन देखा था, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, राइट. The body is thrown vertically upwards. Which one of the following graph correctly represent the velocity versus time? तो यहां वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन, तो u जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा सभी केस के लिए. इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट. तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस gt. तो हर केस में जब टाइम इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो ये जो है माइनस g, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, वी से एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है, सो अप्लाइंग मैथमेटिकल पॉइंट वी कैन से दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लोप, राइट. अगर आपको याद है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx, तो m को हम स्लोप बोलते हैं.
तो सेम ऐसे y v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस gt, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस नेवर इंक्रीजेस, हमेशा वो कम होती जाएगी। तो फर्स्ट ग्राफ में क्या है, एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस। सेकंड ग्राफ में क्या दिया है देखो, वेलोसिटी डिक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड अगेन इट इज इंक्रीजेस। थर्ड ग्राफ में वेलोसिटी इनिशियली इंक्रीजेस, इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड अगेन इट डिक्रीजेस। In second, fourth case, velocity decreases for some time and then again it decreases towards negative option. So इस तीनों ग्राफ में there is change, decreasing, increasing like this. But according to given condition, velocity of the body which is projected vertically upwards, it is always decreases. So first graph is correctly explain the body thrown vertically upwards. Okay, okay student, abhi next question. See, all the graphs below are intended to represent the same motion, one of them does it incorrectly, pick it up. So अभी चारों ग्राफ में से एक ग्राफ ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, वो कौन सा है वो डिसाइड करना है। ओके, दैट इज सेम मोशन, मोशन सेम रहेगी। तो सी मीनिंग ऑफ फर्स्ट वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम दैट इज स्पीड। तो यहां इनिशियली जीरो एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस इनिशियली zero and with time it increases and after some time it tends to remain constant. सेकेंड ग्राफ में क्या है देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन वर्सेस टाइम दैट इज यू कैन से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। पोजीशन चेंज होती जा रही है विथ टाइम, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, अप टू सर्टेन टाइम पोजीशन इंक्रीजेस एंड अगेन इट शोज इट डिक्रीजेस। देखो हाफ पार्ट में ये पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है और उसके बाद वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। थर्ड ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ में पोजीशन इंक्रीजेस तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी आल्सो पॉजिटिव, और इसमें डिक्रीज हो रही है पोजीशन, सो दैट विल बी वेलोसिटी नेगेटिव। हियर क्या है ये देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन डिक्रीजेस विथ टाइम, एट सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स जीरो एंड अगेन इट कंटिन्यूज नेगेटिव। सो एंड फोर्थ वन सी वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो पोजीशन जीरो है, अगेन वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड आफ्टर सम टाइम इट इज इंक्रीज टुवर्ड नेगेटिव एक्सिस। तो अगर आप तीनों कंपेयर करोगे तो इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑल द थ्री ग्राफ्स आर करेक्ट फॉर द सेम मोशन, वेयर दिस वन डजंट मैच, so therefore this is your correct answer. Okay, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, a parachutist after bailing out falls 50 meters without friction. When the parachute opens, it decelerates at 2 meters per second square. He reaches the ground with speed 3 meters per second. At what height did he bail out? तो एग्जाम्पल क्या है समझ में आया, पैराशूटिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले वो प्लेन से या हेलीकॉप्टर से बाहर निकलेगा, उसके बाद वो थोड़ी देर क्या हो जाएगा, विदाउट ओपन द पैराशूट वो नीचे आएगा, और उसके बाद वो पैराशूट ओपन करेगा और उसके बाद अलग वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा। सो दैट इज द गिवन एग्जांपल। सो ए पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट 50 मीटर फॉल विदाउट फ्रिक्शन, दैट मीन्स सपोज आई विल कंसीडर दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, और यहां से वो यहां तक विदाउट बेलिंग आउट, मतलब
आफ्टर बेलिंग आउट विदाउट ओपन द पैराशूट, ये डिस्टेंस दिया है 50 मीटर। यहां इतना नीचे आने के बाद वो क्या करेगा, पैराशूट ओपन करना है। तो इस पोजीशन पे उसने पैराशूट ओपन किया और इसके बाद वो नीचे आ जाएगा। सपोज दिस इज द surface of the ground. So when the parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. तो इसका जो एक्सेलेरेशन दिया है 2 meter per second square. He reaches the ground with speed 3 meter per second. So इधर फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 3 meter per second. At what height did he bail out? तो ये हमें पूरा हाइट निकालना है। ये हाइट कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया क्या? देखो यहां से वो जंप करेगा इस पोजीशन से, तो इसमें u की वैल्यू हो गई 0, ये 50 मीटर, तो ये इस सेक्शन के लिए हो गया h। तो ये टोटल हाइट निकालना है। आई विल कंसीडर दिस इज एज h डैश और h1 50 मीटर। आफ्टर this position he opens the parachute and acceleration is 2 meter per second square। यहां से आगे वो एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो गया और ये है फाइनल वेलोसिटी। तो इधर आपको नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी यहां से, राइट। सो let us solve this first part and then second। तो इसमें क्या हो जाए, फर्स्ट सेक्शन में देयर इज फ्री फॉल, ये जो पार्ट है दैट इज फ्री फॉल। तो इस फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh and s is equals to ut plus half gt square। ये पॉजिटिविटी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन when he opens the parachute, acceleration is given as 2 meter per second। This acceleration is small compared to acceleration due to gravity। तो ये अपोज करेगा, तो ये अपोज करेगा मतलब क्या, वो निगेटिविटी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो इसमें हमें निगेटिव आई विल यूज एज माइनस जी, सॉरी माइनस ए। माइनस ए। तो दोनों केस में ये डिफरेंस रहेगा, इसमें हमें फ्री फॉल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी और इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। तो ठीक है, तो फर्स्ट केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू स्टार्टिंग को 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय g नहीं दिया है, चलो 10 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय h 50। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 15 to 200 into 10, जी 10 नहीं दिया, so better I will change this 9.8 लेके देखते हैं फ्रैक्शन में आया तो मल्टीप्लाई बाय हाइट 50, so that 100 into 9.8 it will give you 980। ये v स्क्वायर है तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस पोजीशन पे उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 980 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड केस में अब क्या हो जाएगा, यहां निगेटिव एक्सेलरेशन है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ऐसे लिखते हैं। तो इधर
v square is given as final velocity 3 मीटर पर सेकेंड, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां u स्क्वायर कौन सी होगी, यहां तो हमने u कंसीडर किया है 0, बॉडी यहां आ गई, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी उसका स्क्वायर, v स्क्वायर 980 इस पोजीशन पे मिला, तो ये जो v है इसी सेक्शन सेकंड सेक्शन के लिए ये हो जाएगा u, क्योंकि यहां से आगे सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेक्शन दैट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकंड सेक्शन, तो u स्क्वायर के लिए मैं ये 980 यूज करूंगा, राइट, -2 मल्टीप्लाई बाय, ए कितना दिया है 2, ये ऑलरेडी मैंने माइनस लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय h, राइट। अभी यहां थोड़ा कंफ्यूजन मत हो, ये टोटल हाइट h है, तो इसको मैं h डैश दिखाऊंगा सेकंड सेक्शन का, तो h डैश करेंगे, सो 9 इज इक्वल्स टू 980 माइनस 4 h डैश, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके, सो ये -4h इधर आएगा, 9 इस साइड को जाएगा, आई विल क्लियर दिस, so see, therefore 4h dash is equals to 980 minus 9, which gives you 971, therefore h dash is equals to कितना हो जाएगा 971 डिवाइड बाय 4, ये थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा, so that becomes 245.5, ठीक है। सो ये h डैश, अभी जो हमने बोला ऐसे दो सेक्शन दिए थे, तो ये h डैश की वैल्यू और ये शुरू में दिया है 50, तो टोटल हाइट इज नथिंग बट h इज इक्वल्स टू h डैश प्लस 50, सो h इज इक्वल्स टू 245.5 plus 50, so that gives you h is equals to 295 around this, right, so हमें तो अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो the most appropriate answer is 293, मे बी मैंने ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन किया है, हो सकता है इधर 243 आ जाएगा, राइट, सो 293 compared to this one, that is the answer.